seconds. Injected into an altitude of 745.5 kilometers seconds. with a relative velocity of 7.57 kilometers per second. Minus 25 seconds. We are mere 25 seconds from the launch. All the movies open. Minus 20 seconds. सभी दर्शक हमारे साथ बने रहिए। Minus 15 सर्वप्रथम seconds. टी माइनस 4.8 सेकेंड्स पर L40s का प्रज्वलन हम देखेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All L40 engines generating nominal thrust. S139 motor Plus 5 ignited. seconds. That's a Tracking. magnificent of the GSLV Lift F-16 off normal. NISAR mission. The deafening roar of GSLV and beautiful 15 seconds. silhouette brightening the Sriharikota sky. जी हाँ, अभी आपने देखा चारों L40 तथा 4 बूस्टर S139 का सफल प्रज्वलन 25 seconds. और GSLV F-16 का उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से, और ये अपने गंतव्य की ओर बढ़ता हुआ। हम यहाँ कंपन महसूस कर पा रहे हैं मिशन नियंत्रण केंद्र पर। The first stage of GSLV with S139 solid core motor and 4 L40 liquid strap-ons thrusting together. 7,800 kilonewton cumulative thrust. First stage performance normal. Sharon is in main auto. The day of launch Plus wind 1 biasing minute. program that is fed into the onboard computers helped the rocket to Shah veer 2 is through in the main auto. atmosphere with minimal aerodynamic loads. प्रथम चरण का कोर बूस्टर लगभग 100 सेकेंड्स तक प्रज्वलित रहेगा तथा L40 चरण 150 सेकेंड तक प्रज्वलित रहकर शांत हो जाएंगे। तत्पश्चात इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। वर्तमान में सभी तंत्र सामान्य निष्पादन करते हुए और यान अपने अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ First जा रहा stage है। performance normal. Currently the rocket is in open loop guidance. Shar ground station is tracking. S139 burnout. कोर बूस्टर का प्रज्वलन समाप्त हो चुका है। Here Plus we have 2 an minutes. announcement from the range operations director that the booster has stopped its operation. The 4 L40s are thrusting still. First stage performance normal. प्रथम चरण का कार्य निष्पादन पूरी तरह सामान्य। यान उद्दिष्ट दिशा की ओर अग्रसर होता हुआ वर्तमान में प्रथम चरण प्रज्वलित है। L40s प्रज्वलित हैं। इनका कुल कार्यकाल 150 सेकंड का होगा। L40 shut off. GS2 ignited. GS1 separated. 1S. IS 1/2 main separated. जी हाँ, अभी आपने सुना रेंज ऑपरेशन निदेशक ने इसकी पुष्टि की है। प्रथम चरण को सफलता से पृथक किया जा चुका है Payload तथा fairing separated. द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Marking Closed loop the guidance milestone of initiated. the flight, the GS1 has undergone a hot separation and GS2 commenced its operation and thrusting nominally. The payload fairing has also been separated and closed loop guidance has been initiated. जी हाँ, इस दौरान Second stage performance normal. वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए पेलोड फेयरिंग या ऊष्मा कवच की आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए इसे यान से पृथक कर दिया जाता है। और अब यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है और स्वतः ही अपना दिशा निर्धारण कर रहा है। Powered by the Vikas engine that uses the Earth storable propellant combination of UH-25 and N2O4, the second stage of GSLV develops 846 kilonewton thrust in vacuum. Burn time for this mission of GS2 is 140 seconds. Plus 4 minutes. दर्शकों का उत्साह देखते ही बनता है यहाँ पर। सभी Second उत्साहित stage इस प्रमोशन performance को लेकर। normal. द्वितीय चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अग्रसर है अपने उद्देश्य कक्षा की ओर। इसमें इस चरण में UH-25 तथा N2O4 ईंधन का प्रयोग किया जाता है।
यह विकास इंजन द्वारा संचालित है। इस चरण का कुल प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। Cryo stage start authorized. जैसा कि हमने पहले बताया था, द्वितीय चरण Second प्रज्वलन stage के दौरान performance ही normal. तृतीय चरण को अनुमोदित कर दिया जाएगा। There is a confirmation of the authorization of the third stage or the cryo stage GS2 thrust cutoff. operation. The second GS2 stage separate. has completed its Cascade operation ignition and commanded. been jettisoned from the ongoing vehicle. द्वितीय चरण के सफलतापूर्वक प्रदर्शन के पश्चात Cryo उसे stage यान से ignition पृथक कर दिया confirmed. गया है और तृतीय तथा अंतिम चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। The यह बहुत ही cryogenic- जटिल चरण है। इसके साथ ही दर्शकों का उत्साह। यह अंतिम चरण है जो उपग्रह को उद्देश्य कक्षा की ओर ले जाएगा। The cryogenic upper stage has commenced its operation. Cryo stage operating at uprated level. The Cus stage with CE 7.5 engine with liquid hydrogen as fuel and liquid oxygen as oxidizer with a nominal thrust of 73.55 kilonewton. In this mission, there will be a thrust upratement of 11%, that is Cryo stage performance normal. 4 kilonewtons for about 405 seconds. plus 6 minutes, वर्तमान में तृतीय चरण क्रायो अपर स्टेज कार्यरत है। इस दौरान यह लगभग 75 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। यह चरण लगभग 850 मिनट सेकेंड्स तक जारी रहेगा। वर्तमान में सापेक्ष गति 3.49 किलोमीटर प्रति सेकेंड तथा ऊंचाई 514 किलोमीटर की हो चुकी है। Cryo stage performance An normal. altitude of 528 kilometers. Shar and Trivandrum stations continue to extend tracking and telemetry support. When the cryo stage had commenced action, the instantaneous relative velocity was 3.5 kilometers per second. plus While the 7 end minutes, of thrust upratement, it becomes 4.5 kilometers per second. For the next 400 seconds that follow, there is a significant addition in the relative velocity of up to 7.5 kilometers per second. Cryo stage performance normal. सभी विशिष्ट वैज्ञानिक यहाँ उपस्थित इस घटना के साक्षी बनने के लिए। तृतीय चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। इस दौरान भू स्थित रडार स्टेशंस शार तथा त्रिवेंद्रम इसे भलीभांति ट्रैक कर रहे हैं। The altitude gained during thrust upratement is about 400 kilometers in cryostage operational regime. When the thrust upratement ends, there is a considerable increase in relative velocity at a marginal loss of altitude. plus 8 minutes, तृतीय चरण की यात्रा लगभग 850 सेकेंड्स तक जारी रहेगी। इस दौरान आपको उपग्रह के बारे में कुछ जानकारियां उपलब्ध करा सकते हैं। नासा इसरो सिंथेटिक Cryo अपर्चर stage रडार, performance normal. जिसे संक्षिप्त में NISAR कहते हैं, वैज्ञानिकों को నాసా భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థల జాయింట్ మిషన్ నిస్సార్ను శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి ప్రయోగించారు. జిఎస్ఎల్వి F-16 రాకెట్ ద్వారా నిస్సార్ శాటిలైట్ నింగిలోకి దూసుకువెళ్లింది. 2393 కేజీల నిస్సార్ ఉపగ్రహాన్ని ఇస్రో, నాసా సంయుక్తంగా రూపొందించాయి. ప్రయోగించిన 18 నిమిషాల తర్వాత ఉపగ్రహాన్ని అంతరిక్షంలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. అడవులు, మైదానాలు, కొండలు, పర్వతాలు, పంటలు, జల వనరులు, మంచు ప్రాంతాలు అన్నిటినీ అధ్యయనం చేయనుంది నిస్సార్. భూమి అణువణువును 12 రోజులకొకసారి స్కాన్ చేయనుంది నిస్సార్. అడవులు, మైదానాలు, కొండలు, పర్వతాలు, పంటలు, జలవనరులు, మంచు ప్రాంతాలు అన్నిటినీ అధ్యయనం చేయనుంది. ఇందులో నాసాకి చెందిన ఎల్ బ్యాండ్, ఇస్రోకి చెందిన ఎస్ బ్యాండ్ రాడార్లను అమర్చారు శాస్త్రవేత్తలు. पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं के बारे में वैज्ञानिक जानकारी का खजाना प्रदान करेगा।
इन सभी वैज्ञानिक आंकड़ों के लिए लगभग 9000 Cryostage किलोमीटर दूर performance normal. वैज्ञानिक आपस में जुड़ चुके हैं तथा आपसी सहयोग से इस महत्वाकांक्षी मिशन को एक व्यापक लक्ष्य तक पहुंचा रहे हैं। NISAR, or the NASA ISRO Synthetic Aperture Radar, is a remarkable milestone in the Indo-US space ties. Designed on the I-3K mainframe bus, NISAR will render services for the next 5 years according to free and open data policy. NISAR provides 10 a minutes. means of disentangling and clarifying spatially and temporally complex phenomena ranging from ecosystem disturbances to ice sheet collapse and natural hazards including earthquakes, tsunamis, volcanoes and landslides. ISRO has identified a range of applications of particular relevance to India that the mission will Cryostage address, performance normal. including monitoring agricultural biomass over India, monitoring and assessing disasters to which India responds, studying snow and glaciers in the Himalayas, and studying Indian coastal and near-shore oceans by monitoring annual changes in bathymetry along the deltaic regions, shoreline and erosion accretion. The changes that Earth is undergoing in its ecosystem, deformation and cryospheric sciences emphasizes the urgent and constant need to observe Earth from the vantage of space in order to thrive on our changing planets in decades to come. NISAR offers centimeter-level precision capable of detecting subtle ground shifts and environmental changes. Data from NISAR will provide critical insights to help India and US plan for natural and Cryostage performance human-caused normal. hazards. Today, when the GSLV F-16 rocket of ISRO places NISAR in its intended orbit, a critical deployment event, that is, of the 12-meter wide mesh reflector will take place. This mesh reflector acts as a radar antenna. The deployment will be a slow sequence to ensure the delicate boom and antenna unfold without damage or misalignment. The deployment will begin 10 days after launch and will be carried out over the next 8 days. Plus 12 minutes. To prepare NISAR for science operations, in-orbit checkout, physical deployment of all deployable parts, checking out the engineering systems, testing the radars independently and jointly. This phase will last for 90 days after the launch. Extensive calibration and validation activities will take place Cryostage throughout the operating at first 5 nominal level. months. The schedule of science observations alone will be driven by a variety of inputs, including L and S band target maps, radar mode tables, and spacecraft and ground station constraints and capabilities. तृतीय चरण क्रायोपर स्टेज का कार्य निष्पादन पूरी तरह सामान्य। वर्तमान में सापेक्ष गति 4.9 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा ऊंचाई 700। నాసా భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థల జాయింట్ మిషన్ నిసార్ ను శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి ప్రయోగించారు. జిఎస్ఎల్వి F-16 రాకెట్ ద్వారా నిసార్ శాటిలైట్ నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది. 2393 కేజీల నిసార్ ఉపగ్రహాన్ని ఇస్రో, నాసా సంయుక్తంగా రూపొందించాయి. ప్రయోగించిన 18 నిమిషాల తర్వాత ఉపగ్రహాన్ని అంతరిక్షంలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. అడవులు, మైదానాలు, కొండలు, పర్వతాలు, పంటలు, జల వనరులు, మంచు ప్రాంతాలన్నిటినీ అధ్యయనం చేయనుంది నిసార్. భూమి అణువణువును 12 రోజులకొకసారి స్కాన్ చేయనుంది నిసార్. అడవులు, మైదానాలు, కొండలు, పర్వతాలు, పంటలు, జల వనరులు, మంచు ప్రాంతాలన్నిటినీ అధ్యయనం చేయనుంది. ఇందులో నాసాకి చెందిన ఎల్ బ్యాండ్, ఇస్రోకి చెందిన ఎస్ బ్యాండ్ రాడార్లను అమర్చారు శాస్త్రవేత్తలు. चित्र में बदलाव से पृथ्वी में की सतह पर आए बदलावों को Plus अध्ययन कर 14 सकते हैं। minutes. नाइसार अंतरिक्ष यान नासा और इसरो द्वारा तैयार की गई सबसे उन्नत रडार प्रणाली वाला उपग्रह है। यह अन्य सिंथेटिक अपर्चर रडार की तुलना में अत्यधिक शक्तिशाली है। इसमें 2 रडार नितंभार लगे हुए हैं। एक नासा द्वारा तैयार किया हुआ 25 सेंटीमीटर वेवलेंथ का एल बैंड
रडार सिस्टम है तथा दूसरा इसरो द्वारा तैयार किया हुआ 10 सेंटीमीटर वेवलेंथ का एस बैंड रडार सिस्टम है। इसमें हर एक प्रणाली विभिन्न विशेषताओं के मापन में माहिर है, Cryostage जैसे performance कि normal. मिट्टी में नमी, सतह का खुरदरापन और गति। निसार सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में काम करने जा रहा है। इसके एंटीना एक खास विन्यास में अंटार्कटिका का अभूतपूर्व अवलोकन कर सकेंगे। यह अंटार्कटिका के बर्फ की चादर, विरूपण और पिघलने के सटीक अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नाइसार अंतरिक्ष यान दैनिक आधार पर सबसे अधिक डेटा उत्पादन Plus करेगा। 15 minutes. यह 3 साल के मुख्य मिशन के दौरान 100 पीटाबाइट डेटा उपलब्ध कराएगा, जो कि प्रतिदिन 80 टेराबाइट डेटा के बराबर है। इतने बड़े डेटाबेस के कारण इसे क्लाउड के माध्यम से संसाधित, संग्रहित और वितरित किया जाएगा। सभी एस बैंड और एल बैंड डेटा इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC के माध्यम से Performance